from Jomsom. तो मैं कल 3:30 बजे Jomsom पहुंच गया. I'll show you guys how the place looks like from my hotel. This is my hotel. It's a very small, cozy hotel. This is how the place looks like. तो आज का प्लान है विल गो टू मुक्तिनाथ टेम्पल, दर्शन करेंगे और फिर विल गो टू अनदर लेक. देयर इज़ अ लेक ओवर हियर, नाम उतना क्लियरली पता नहीं, लेकिन विल गो देयर एज वेल. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. अभी नाश्ता खा लेते हैं यहाँ. टाइम हो रहा है 6 नेपाली 6. ओके, यहाँ से 7 बजे निकलेंगे और फिर जाएंगे वहाँ. आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू टेक ड्रोन शॉट्स क्योंकि एयरपोर्ट बस बगल में ही है. तो दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग एवर, क्योंकि ड्रोन शॉट लेने से यहाँ क्या सही होगा यार. तो आई फाउंड दिस टेम्पल विच इज़ अ लिटिल हायर देन द जोमसम बाज़ार. दिस इज़ द टेम्पल. आई शो यू हाउ द बाज़ार लुक्स लाइक फ्रॉम हियर. ओके, तो आज का राइड स्टार्ट कर लेते हैं. तो जोमसम को करते हैं बाय बाय. एंड द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्लोज बिसाइड जोमसम इज काली गंडकी. कता हो, राइट हो कि लेफ्ट हो? भाई कता यता कि यता? मुक्तिनाथ यता है. मैं इतना धीरे चला रहा हूँ ना ये बाइक बिकॉज ऑफ द टायर, लेकिन ये लोग को देखो ना कैसे चला रहे हैं. वो क्या था भाई वो? लाइक इनको अरे टायर फट जाने का डर है ना मेरा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे चला रहा हूँ. लेकिन ये लोग तो उड़ा रहे हैं. लुक एट द लोकेशन. वाओ ब्रो. You guys must have seen the drone shot of this mountain. Wow, कितनी खूबसूरत जगह है यार. यू नहीं, मैं अकेला हूँ लेकिन आई डोंट फील अलोन यार. सच्ची में बोल रहा हूँ. दिस प्लेस इज टू ब्यूटीफुल. आई एम टेलिंग यू. पीपल आर द स्वीटेस्ट. दे आर सो हेल्पफुल, वेरी कम्युनिकेटिव. दे लाइक टू टॉक. उनको बात करने को बहुत मन है. Especially when they see the Indian plate number and foreigners, they talk to us. Very nice people, very responsive as well. Are these guys from India or what? कहाँ से हो? असम. ओ असम से. मैं मणिपुर से. हाँ. कहाँ जा रहे हो? मुक्तिनाथ से फिर चलो सी यू. ठीक है. ए नेपाली हो? लो होइन, आसामको भन्नु हो नि त. वाओ, इट्स इन द मिडल ऑफ नोवेयर यार. वो पानी इतना सफ़ा है. द रिवर इज फ्लोइंग नेक्स्ट टू इट. रिवर इतना गंदा है और फिर वो छोटा सा लेक, नॉट लेक, पॉन्ड. ओके, तो देयर इज दिस सस्पेंशन ब्रिज ओवर हियर. आई वांटेड टू राइड माय बाइक. आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट. और तो नहीं.
Oh भाई, hey, let's do it. Oh wow, this is so different. मम्मा टेन्सन नलिनु, केही हुँदैन, केही यसमा मान्छे हिँड्छ सामानहरू बोकेर। Come on, ये रास्ता में आकर if you don't stand up and ride, you haven't done the ride. तो मुक्तिनाथ यहाँ से इट्स जस्ट 1 किलोमीटर। गाड़ी सब वहाँ पार्क्ड है, शायद थोड़ा चलना पड़ेगा ऊपर। द फर्स्ट नेपाली वर्ड आई कैन रीड, मुक्तिनाथ जाने बाटो। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ। एक तो मैंने ढंग से पढ़ लिया। फाइनली मुक्तिनाथ पहुँच गए। दिस इज हाउ द गेट लुक्स लाइक। आई विल बी गोइंग विद दीस गाइस। The gate looks like from here. What is name? Mustang. Deepak and Dumba Lake. So I met them on the way. भाई असम से और फिर आप लोग नेपाल से। तो we'll go upstairs. क्या खा रहे हैं? शायद 10 मिनट का ट्रैक होगा। फाइनली पहुंच गए मुक्तिनाथ और दिस इज द टेम्पल। एंड द मेन थिंग जो यहाँ होता है वो है 108 वाटर टैप मिलेगा। एंड और इफ़ यू बैथ इन ऑल ऑफ दीज, ऑल योर सिंस विल गेट वॉश्ड अवे। दैट इज़ व्हाट इट्स बिलीव्ड ओवर हियर। सो लुक एट द पीपल टेकिंग बैथ। आई एम नॉट सपोज्ड टू बी शोइंग यू बट स्टिल। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद आपको यहाँ वैसे एक डुबकी लगा के यहाँ एक बार, फिर वहाँ एक बार लगा के यू आर डन। उसके बाद इट्स बिलीव्ड आपका सब पाप धुल जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू डू टुडे। मैं करने वाला नहीं, लेकिन भाई करने वाला है यार। मैं करने वाला हूँ और करके छोड़ूंगा। पता नहीं कब आएंगे, इसलिए वो करने वाला है। बट आई डोंट हैव द क्लोथ। मैंने कपड़ा लाया नहीं, तो आई एम नॉट डूइंग इट। आई विश आई कुड। You can, bro, you can. नहीं, कपड़ा नहीं लाया है। मैं भी कपड़ा लेके नहीं आया, पर मैं भी करूँगा। नहीं यार, नहीं कपड़ा। कौन अब ये भैया सोच रहे होंगे ये क्लिप में काट देता हूँ। ये क्लिप काटना पड़ेगा। ये क्लिप काटना पड़ेगा। पक्का डालेंगे। नहीं सच में। When I come to Upper Mustang, I'll obviously do it. म अर्को पालि चाहिँ गर्छु, अहिले चाहिँ गरिनँ। अहिले दर्शन मात्रै गर्छु। मुक्तिनाथ का दर्शन हो गया। अभी निकल रहे हैं दुम्बा लेक की तरफ फॉर द लास्ट टाइम। दैट इज द माउंटेन। आज इतना क्लियर नहीं था, बट इट्स टोटली वर्थ इट, टोटली।
बोल रहा है वही होने वाला है। मैं इस तरफ जा रहा हूँ और ये लोग इस तरफ, शायद पोखरा पोखरामा भेटिन्छ फेरि। पोखरामा म भोलि आउँछु होला, भेटिहालिन्छ। अब भोलि भेटौँ न त, ल त भोलि नमस्ते। ल ल भेटौँ न त फेरि एकदम ल। चलते हैं, लेट्स सी हाउ दिस लेक लुक्स लाइक। मैंने थोड़ी देर जो आपको ड्रोन शॉट दिखाया था ना, दिस इज लाइक द सेम विलेज। कितना स्ट्रेंज है यार ये जगह, और कितना खूबसूरत भी। अरे लेक है कहाँ? ओह उस तरफ जाना है क्या मेरे को? ओह आगे से रिवर क्रॉसिंग है, यहाँ से ब्रिज है तो ब्रिज इज नॉट सेफ। यस लेट्स स्टैंड एंड गो। ओह वाओ There you have it. There is the lake. Out of nowhere, in the middle of mountain, there is a lake. Can you imagine? Guru Dongmar का छोटा भाई होगा ये. Not just a normal lake, because this lake is located at the height of 2,800, probably 2,900 meters. That is why it is very unique. शायद गुरु दोंगमर से थोड़ा लेस ऑल्टीट्यूड में होगा ये, इसलिए। बट दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स लाइक, यू कैन सी। एंड दिस प्लेस इज जस्ट नेक्स्ट टू जोमसम बाजार, नॉट वेरी far away. It's just 7 to 8 kilometers away. You guys are not gonna believe मैं कहाँ हूँ ना. It's very unique. Look at this. This is not just a wall. This is a snow leopard's cave. The leopard cave, which is truly unique of Mustang, is situated at 2,900 meters from sea level. I don't even know if I want to go inside. It looks very scary. But this is what I've come here for. Let's go inside. Oh, it's so cold. Look at that. Why is that door closed? Come on, it's very scary. Oh shit. यहाँ लेपर्ड बैठता होगा और ये व्यू देखता होगा. Look at this. What a place to finish this vlog. Truly amazing. Mustang. Just lower. This is just lower Mustang. Imagine आप upper Mustang चला गए तो क्या दिखने को मिलेगा. Obviously next year we'll be going to upper Mustang. So this is it for today. I'm so happy while I'm saying this, because this is the most unique place I can end my video. I don't think I'll ever end my video in this kind of place. Never. So if you guys liked it, please like, share. Don't forget to share. Do not forget to do that. Stay safe. Take care. I'll be going to Pokhara tomorrow. वहाँ से I have planned something else. क्योंकि 10 दिन का भांसार लिया है मैंने. It's not over. It's only been 4 days now. So I'll keep you guys updated. Please stay safe. Take care. And bye bye.